morning students, how are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. I am Nishata from Saraswati Group of Education. And children, today we are meeting for our first session of revision. Yes, your exams are going to start soon. So today we are going to revise chapter number 6, money, and tables of 11 as well as 12. Right? So before starting our lecture, children, first of all, let us do a quick recap of money chapter. Right? What we learned in money? We learned about exchange of money. How money can be exchanged with different notes or coins. Right? Then we learned how rupees and paisas are created and how are you supposed to write rupees as well as paisa in words and in numericals, that is numbers. Right? And we even did the story sums related to money, that is addition as well as subtraction sums of money. Now, based on that, I have taken some of the questions related to online exams which I have written on the board. You are going to have online exams as well as offline exams. So right now I have taken all the questions which can be asked in online exams, right? And based on that, I will also discuss some of the questions that can be asked in offline exams. First of all, in offline exams, the type of the questions that will be asked is, you have to solve word problems, that is story sums, that we are already doing in addition and subtraction. We have done in money also. So those kind of questions will be asked in offline exams, where you have to write the statements for the sentence. अगर स्टोरी सम में वर्ड प्रॉब्लम जिसको स्टोरी सम कहते हैं उसमें आपने स्टेटमेंट्स नहीं लिखे तो आपको स्टेटमेंट्स के मार्क्स कट होंगे. अगर आपने सिर्फ कैलकुलेशन किया है तो उसका सिर्फ उतना ही मार्क मिलेगा. राइट? देन यू कैन बी आस्क्ड एज डू एज डायरेक्टेड. मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकती हूँ. डू एज डायरेक्टेड मतलब जो बोला है वैसे करो. क्वेश्चन में जो मेंशन किया गया हो वैसे ही उसका आंसर लिखना है. राइट? So these kind of questions, then questions related to money also can be asked. Like you can be given different notes, you have to form the combination, or you have to find out the price of a product with the help of money. So these all type of questions can be asked in subjective exams. Now this was all related to subjective exams chapters. Now in subjective exams, tables can also be asked. अब टेबल्स हैं तो मैं आपको जम्बल्ड टेबल्स के फॉर्म में भी पूछ सकती हूँ या टेबल में कोई ट्विस्ट ला के पूछ सकती हूँ. बट बेसिकली आपको टेबल्स लर्न होने चाहिए. तो किसी भी फॉर्म में ऑनलाइन और ऑफलाइन टेबल्स भी आ सकते हैं. राइट? नाउ चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट विथ अवर टुडेज सेशन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ. It means that you will be given 3 options. Out of that you have to find out which is the right option. So today we are going to discuss about money and tables. Okay, so let's begin. The first question is 65.50. Now, what does this indicate? How will you write 65 rupees 50 paisa in words? How will you write this? So for this you need to know the spelling. So first is 65 rupees 15 paisa. See, here it is written 15. यहाँ पे 15 है? No. So this is not right. Second is 65 rupees 20 paisa. Is there 20 paisa? No. So this option is also wrong. And the third option is 65 rupees 50 paisa. So what is the right answer? Third one. Why? Because it says exactly 65 rupees 50 paisa. So the right answer is C. So I'll take C as an answer. Right? So you have to be very careful while you choose the option. यही चीज मैं इसको क्वेश्चन बना सकती हूँ और ऐसे अलग अलग 3 आपको ऑप्शंस दे सकती हूँ. Anyway, the same thing can be asked. Second question is 45 rupees 25 paisa. See, यही चीज ये जो थी वो इस फॉर्म में आ गई.
Now how will you write 45.20 or 45.25 or 45.50? What will be the correct answer? It is 45 rupees. So आगे हर जगह 45 है and 25 पैसा. So which will be this 0.25, जहाँ पे पीछे 0.25 आएगा वही होगा, right? So right answer is B, right? Now third question says you are given a note, it indicates ₹20. अब इसमें पूछा गया है 20 is equals to dash. What does this 20 mean? 2 notes of 10, 2 notes of 5, 2 notes of 20. What will be the right answer? 10 की 2 नोट आप ऐड करो, 10 plus 10 20 बना, तो क्या हुआ आंसर? क्या हुआ? 2 notes of 10, right? So which is the correct option? A. See, that is why I am telling you, you should be knowing the combination, जिससे आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आए तो आप उसका आंसर कर सके, right? Now fourth question is ₹10 plus ₹20 plus ₹50 equals to dash. Simple addition. 10 plus 20 is 30 and 30 plus 50 is 40, 50, 60, 70 and 80. So answer is ₹80. So first is ₹90. No. Second is ₹80. Yes. And third is ₹70. So what is the right answer? B. ₹80. Right? Now fifth is we write rupees as. Rupees हम कैसे लिखते हैं? Is it this way, RS, or is it this R and 2 lines, or is it this P? What is the proper way of writing rupees? Yes, the right answer is B. पहले ऐसे चलता था, but currently this is the sign of rupee, right? So don't do the mistake, and this is for paisa, right? Now sixth question is of tables. 12 multiplied by 4. What will be the answer? See, I am doing it here. 12 multiplied by 4. What will be the answer? You are already having multiplication chapter this year in which you are going to learn this, right? So you can calculate like this, or if you remember orally, then it is very good, right? 4 2s are 8, 4 1s are 4. So the answer is 48. So where is the answer? A 60, B 36 or C 48? So the right answer is C 48. Right? Now seventh question is 11 multiplied by 7. 11 7s are 70. A is 7, B is 70 and C is 77. I told you 70. Is it the right answer? No. The right answer is 77. So what you will write? 11 7s are 77. Right? Now this was all about questions related to multiple choice questions. Right? Now next is question number 2, which is blanks. So you got a rough idea कि किस टाइप के क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकते हैं, राइट? नाउ सेकंड इज ब्लैंक्स. आपको पता है ब्लैंक्स का फॉर्मेट क्या है? आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस होंगे और इतनी ब्लैंक्स पूछी गई होगी. आपको इसमें से अप्रोप्रिएट ब्लैंक सिलेक्ट करके वो आंसर लिखना है, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 rupee is equals to dash P. P stands for पैसा. 1 rupee मतलब कितना पैसा हुआ? In the starting of the chapter we learned how many paisas make 1 rupee? Yes, answer is 100. So what we'll do? We'll write here 100. So this option is done, right? Second is 1 coin of 5 and 1 note of 20 makes dash. एक कॉइन है 5 का और एक है नोट 20. What does that make? 20 and 5 makes 25. So कितने रुपए बने? 25. So what will be the answer? 25. Right? So this option is also done.
Next is 12 multiplied by 8. Again the same thing. If you don't remember the table, you have to calculate it. 8 2s are 16. Carry 1. 8 1s are 8 and 1 is 9. So the answer will be 96. So where is 96? It's D. 96. Similarly, 11 9s are. It is very simple. The answer is 99. So this is the way blanks can be asked. Blanks में कोई definitions भी आ सकती है. Like you can say notes and currencies are known as, in India notes and currencies are known as, notes and coins are known as, what it is known? It is the currency of India. So what will write? It is the currency of India. या यही चीज मैं आपको true और false में भी पूछ सकती हूँ. There are different ways I can ask the same thing, right? Now next is true or false. Yes, that's what I was saying. It's the same thing in true or false. First is money is in the form of currency, notes and coins. Yes, this is the starting part that we have learned in the book, जो बुक में दिया गया है. मनी का मतलब क्या हुआ? करेंसी, नोट्स और कॉइन्स. यस, सो द आंसर इज ट्रू. सो चिल्ड्रन रिमेम्बर कि आप जब भी कुछ भी बुक में रिवाइज करते हो, प्लीज डू रीड द स्टार्टिंग पेजेस ऑफ इट. नॉट ओनली स्टार्टिंग, जो भी रिटर्न पोर्शन दिया गया है एक्सप्लेनेशन के लिए वो सब रीड करिए, बिकॉज एग्जाम में उसमें से भी कुछ भी मैं पूछ सकती हूँ. राइट? सो डू रिवाइज एंड डू रीड ईच एंड एवरी, बिकॉज अगर ये आपने बुक में नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये अटेम्प्ट करने में दिक्कत हो सकती है. राइट? नाउ सेकेंड इज ₹10 is formed by combining 6 coins of ₹2. It means 10 रुपी जो बनते हैं उसके लिए आपको 6 coins 2 rupees के चाहिए. 1 2 3 4 5 6. ऐड करो. 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10 and 10 + 2 12. तो 1 coin ज्यादा हुआ. इसमें बोला 6 coins चाहिए. नो, आंसर इज 5 coins चाहिए 2 rupees के. So what will be the answer? False, right? Then next is 24 is equals to 12 multiplied by 2. 12 multiplied by 2 क्या होता है? 12 1s are 12, 12 2s are 24. So is 24 equals to 12 multiplied by 2? Right? Because इसका आंसर वही आता है. So answer is true. See, I have written the whole table of 12 multiplied by 2. सो इस तरीके से एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेबल्स इक्वल्स टू करके या राइट द टेबल्स ऐसे ही आए. इस फॉर्म में भी टेबल्स आ सकते हैं. राइट? नाउ फोर्थ इज 11 multiplied by 10 is equals to 100. What is the right answer? 11 8s are 88, 11 9s are 99, 11 10s are 110. And what is given here? 100. So is it right? No. So what will be the answer? False. Right? So this way true or false can be asked. Now coming to fourth question, match A with B. Okay. Now in this question, see, I have taken tables and money question, money chapter both. First is 11 multiplied by 9. 11 9s are 99. तो इसके साथ क्या आ जाएगा? 1 के साथ B. I am writing here 1 के साथ B. 2 के साथ क्या जाएगा? 5 coins of 10. 10 rupees के 5 coins कितने होंगे? 10, 20, 30, 40, 50. तो क्या हुआ? 50 हुआ. सो कहाँ है 50? इट्स C. तो सेकेंड में क्या आएगा? C. और थर्ड में द रिमेनिंग वन स्टिल विल कंफर्म. 2 coins of 5. 5 rupees के 2 coins. 5 + 5 is 10. So answer will be 10. अरे sorry, 10 क्या है? A. So answer will be A. So what you will write? What is the right answer? 1 का B, 2 का C, 3 का A. B C A. You will find where is B C A? B A C. No.
B, C, A. Yes, this is the right answer. So you will take that as right answer. Right? So children, these kind of questions can be asked in exams. और ऐसा नहीं है यही आएंगे. It's not that. This is just a revision. So I cannot cover up all the things. Okay? So इस टाइप के आ सकते हैं, इससे कुछ अलग भी आ सकते हैं. So be prepared with the textbook part as well as the explanation part. कहीं से भी कुछ भी आ सकता है. Right? Now children, coming to this point, subjective exam. अब स्टोरी सम्स जो मैंने आपको बुक में कराए हैं उस टाइप के भी आ सकते हैं, उससे डिफरेंट भी आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अनीता हैज ₹100. She gave 20 rupee to Radha and 40 rupee to Shyam. What is the amount left with her? This kind of question can be asked. तो इसमें आप क्या लिखोगे? अनीता के पास 100 रुपीज है, उसमें से 20 रुपीज उसने राधा को दिए और 40 रुपीज उसने श्याम को दिए. अब उसके पास कितने बचे? तो ये स्टोरी सम हो गया, वर्ड प्रॉब्लम हो गया. तो आप सॉरी, तो आप इसमें कैसे लिखोगे? टोटल रुपीज अनीता हैड इज इक्वल्स टू ₹100 माइनस she gave to Radha and Shyam. अब पहले उसने राधा और श्याम को कितने दिए उसको ऐड करेंगे. इसका मतलब ₹20 प्लस ₹40. आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 40 and 20 60. तो आप क्या करेंगे? ये 60 रुपीज इसमें से माइनस करेंगे, माइनस ₹60. व्हाट विल बी द आंसर? 0 minus 0 0. नाउ अगेन 0 minus 6 नो, सो 10 विल बी हियर. 10 minus 6 4. सो व्हाट विल बी द आंसर? 40. तो फाइनल स्टेटमेंट क्या रहेगा? अमाउंट लेफ्ट विथ अनीता. राइट? So this is question of addition और subtraction. दोनों क्वेश्चन एक ही साथ एक ही क्वेश्चन में पूछे गए हैं. इस टाइप के आपको एग्जाम में देयर आर चांसेस कि इस टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछे जाए. या फिर सिंपल एडिशन का भी पूछ सकती हूँ कि अनीता हैड ₹100. शी गेव ₹40 टू श्याम. डायरेक्टली व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट विथ हर? तो क्या आएगा? यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिख रही मैं. टोटल अमाउंट, यहाँ टोटल रुपीज अनीता हैड 100 माइनस शी गेव टू श्याम ₹40. सो मनी लेफ्ट विथ अनीता इज ₹60. इस टाइप का भी आ सकता है या सिंपल एडिशन भी आ सकता है. अनीता हैड 100 रुपीज, हर फादर गेव हर 20 रुपीज मोर. हाउ मच अमाउंट डज शी हैव नाउ? तो क्या हुआ? अनीता हैड ₹100 प्लस हर फादर गेव हर ₹20 मोर इज इक्वल्स टू 120. वो क्या आएगा स्टेटमेंट? टोटल अमाउंट विथ अनीता. राइट? सो दिस वे स्टोरी सम्स रिलेटेड टू मनी चैप्टर कैन बी आस्क्ड. But no story sum of multiplication will be asked because still we are not done with the story sums of multiplication. Right? So these are the things that can be covered up in exam. Or else book में से भी किसी भी टाइप का मिक्सचर आ सकता है. आपको कॉम्बिनेशन का भी मैं बोल सकती हूँ कि इसका कॉम्बिनेशन बनाओ. 10 रुपीज कैसे बनते हैं, 15 रुपीज कैसे बनते हैं. I'll give you some notes, some coins and you have to make out the combination.
anything kind of that could be asked, right? So children, so we are done with today's lecture. Now the homework is you have to solve the revision worksheet that I have posted with this lecture. वो आप किस में solve करोगे? In rough book, right? You have to directly write the answers, and in exam do not forget to keep a rough paper with you, जिसमें आपको, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस तो आएगा, तो अगर रफ बुक होगी, रफ पेपर होगा आपके हाथ में, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप कैलकुलेशंस कर सके, right? So in online exams as well as offline exams, keep a rough book or sorry a rough page with you so that you can do the calculations about it, right? So with this children, we come to an end of our session. I hope you enjoyed the session and we'll be meeting back soon in our next session. Bye bye.